Hi everyone, welcome to StudyIQ platform, YouTube platform. And आज सेसन रे हमें जो आमर जुलाई वीक रो जो जुलाई थर्ड वीक करेंट अफेयर को कवर करने पे चेष्टा करबी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर सब नहीं आसी जो थे आपन को ओडिशा सेक्शन लास्ट को रही तो फास्ट आम किसी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को देखा देन वी विल कम्स टू द व्हाट लास्ट सेशन आम ओडिशा देखा जमी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑफ ओडिशा and some of the issues like the Satkosia Tiger Reserve construction, I would say like ecotourism, infrastructure development, construction, jaku neki Supreme Court re madhya case chalchi. So we will start with the issues with our Honorable Prime Minister. The Prime Minister is back to back. He's been regarded as the most strongest person of the world. That means ଏବେ recently ଗୋଟେ ranking America ଗୋଟେ American agency ଗୋଟେ ranking କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି Prime Minister Narendra Modi is the third time Prime Minister Modi ji become the second longest and this is okay just a minute ये जो ranking जोटा आपन कहूची मु एथरे ऐड करिवि मु एथरे देखिबि मध्य and that means एथरे मध्य मु आपन को देखैबि से जो कथा मु कहउतली के Prime Minister नरेंद्र मोदी जोटा हम कहबा ये होचंती जोटा कि डोनाल्ड ट्रम्प को पछरे पकई कि हमें कहबा से वर्ल्ड रो नंबर 1 एंड द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन बोली कहउचंती कि कहउची ये कथा कहउचंती अगेन एठी देखे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has once again topped the latest global list of the democratic leader approval rating with 75% of approval score. That means rating one of the most trustable leader in the world. तांको पछरे अछंती साउथ कोरिया रो प्राइम मिनिस्टर में कहबा लीजिया तो ये इशू मतलब इशू तो नो इट्स ए प्राइड फॉर इंडिया प्राइड फॉर द नेशन बैक टू बैक हम कहबा से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आम देखा आउरी तांको मते गोटे कम्प्लीमेंट जिनस आम देखा मिले कौन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू आम कहि परिबा 11 वर्ष ना 11 वर्ष आम कहबा कंटिन्यूअसली सीएम होके अछंती दैट मींस से पछरे पकई दैछंती काहाकू इंदिरा गांधी को पछरे पकई सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एटा बीजेपी पई मध्य गौरवर कथा से माने मध्य ताकू जिकर करछंती and जदि हम देखो overall nation is pride for him because of his contribution for the nation. That means आपको हमें कहबा 4075 days in high office जदि हम कहबा ये पूरा तांकर हमें कहबा कि 2001 रु जदि हम देखिबा स्टार्टिंग करबा 2001 रे चित्र से गुजरात रो सीएम हेले तो गुजरात रो चीफ मिनिस्टर 13 वर्ष रहिला पर एठी 11 वर्ष हमें कहबा प्राइम मिनिस्टर तो लगभग 24 वर्ष कंटिन्यूअसली जदि हम कहबा 24 वर्ष कंटिन्यूअसली एज ए टॉप लीडर इन सीएम एंड पीएम पोस्ट तो कंटिन्यूअसली एते वर्ष 4000 एतिक डेज हम देखबा जोटा कि इंदिरा गांधी 4077 डेज थिले एंड ही बिकम 4078 डेज है तो जोटा कि वाजपेयी को परे जदि हम देखबा बीजेपी रो कोन से लीडर जदि 3 थर बा बैक टू बैक 3 थर पीएम होबा एंड एते दिन सर्व करबा तो ये होचन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ता पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी हम कहबा दैट इज द बीजेपी स्टॉलवर्ट जे कि इन 1996 रे 13 डेज पे हितले देन 1998 रे मध्ये हितले से 13 मंथ्स पे एंड 1999 रे फॉर द फुल टर्म्स हम कहि परिबा स्टडी आई को आपन पन पई नै कि आसी परिपूर्ण बैच 6 जोटा कि हमें नै कि आसी छु ये बैच रे आपन को कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू प्रोग्राम्स रही जो थरे आपन डेली लाइव क्लासेस पाइबे 10 मंथ्स रो रहिबो मोर देन 1200 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस विथ I would say good faculties across India, right, including some faculties from Odisha like me, Purushottam Sir, Jatadhari Sir and other faculties as well. The batch को enroll करो use the code double otherwise you can also use my code SHLIV capital so that एटा जोटा 10999 होची सेटा 9999 हिजो if you are using my code. सेल एंड होची आपनको 31 जुलाई 2025 रे एंड होची राइट ये टॉपिक को हमें देखी दी ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था जोटा कि हमें कहबा देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आजिकल मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूज चलती खास कर हमें कहबा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर ये बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज कौन से न्यूज द न्यूज इज यूके इंडिया फ्री ट्रेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव हमें कहबा दैट इज द व्हाट सेपा जाको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट हमें कहबा कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स हमें कहि परबा सेपा. So here you can see the Prime Minister of Narendra Modi and star marks of UK Prime Minister. So these are sign करूँचंती. That means हमें कहिबा ये जो relation that we have evolved, that SEPA free trade agreement with UK हमें कहिबा. तो ये trade agreement केतेବେଳେ आସୁଛି when the world is moving
trade war type of situation. Donald Trump president hela pare ame the situation is like the tariff tension has emerged, and he is also rightly called as the tariff king. Say situation is a trade deal hochi, that's a good, I would say, sign for India. So এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, दैट एटलिस्ट हाँ आम गुड डील करें तादर बेनिफिट्स। तो आपको नहीं कि आपको क्वेश्चन देखो आपर यूपीएससी आगुरी क्वेश्चन पचार एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रोबेबल एरिया जोटा कि कहीपर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एरिया दैट वन नीड टू इम्प्रूव। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? Tariff reduction. So first important point is your tariff reduction. So first and the foremost point you have to remember what ना देखो जेतरा में आंसर लिखुचे ना तो आंसर लिखे पे हमको कौन दरकार some of the key points, some of the further point and the further point is the tariff reduction. How much tariff reduction will be there? 90% of UK goods including this. So India will cut 90% of what tariff आमे कहबा on the UK goods जेमति कि तमरा automobiles की एक्सपोर्ट विस्की, दैट मीन्स विस्की सस्ता हो, ऑटोमोबाइल सस्ता हो, जोटा कि कहे यूके रसुचे से भाया यूके आम किसी कर यूके आम कौन कर जीरो तारीफ आम जो 90% कमुचे से भी तो कमेब ना, विन विन सिचुएशन हवा दरकार। दैट डज नॉट मीन्स इंडिया विल डू द कंसेशन, इंडिया विल डू द कॉम्प्रोमाइज एंड द नेक्स्ट पार्टी वुड नॉट डू। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, राइट? जस्ट अ मिनट। So what is happening? So that means the UK market access would be what? UK will offer 99% duty free. So India जेतले 90% reduction करूची, UK also doing what? 90%, that is the duty free access to the Indian export, covering what? All trades, nearly all trades by value. जेति कि हमें ट्रेड एक्सपोर्ट करूचे लगभग सबू ऊपर से काउंट करछे 99% बा लगभग हमें कहबा जीरो, तो लगभग जीरो रिडक्शन बा 0% तारीफ को जाउची के यूके। तो हमें 90% कमेली से 99% कमेला। सो दिस इज रेसिप्रोकल वन टाइप ऑफ, दिस इज व्हाट वन टाइप ऑफ रेसिप्रोकल। जेमति कि आपण देखि पर प्रोफेशनल मोबिलिटी एनुअल कोटा के तो रहला 1800 इंडियंस प्रोफेशनल विल बी अलाउड टू वर्क इन यूके स्किल्ड सेक्टर। तादर आमर कौन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम, जमती फॉर एग्जांपल आपने हेमत के वर्ल्ड स्किल सेंटर इन व्हाट आई वुड बी वर्ल्ड स्किल सेंटर आम कह कौटी अच्छे, दैट इज भुवनेश्वर। इन द भुवनेश्वर वर्ल्ड स्किल सेंटर व्हाट हैपेंस, these peoples or I would say the students, those who are coming out from the Bhubaneswar skill center after getting the skill, and that skill they need to impact somewhere else in the world, and as this one is the world skill center, I hope those guys are coming with skilled work. They would be having, they will have opportunity to work somewhere else, and that is why this is this profession that 1800 strong skilled people will have permission to work there. Apart from that, the service sector, it will have win, and this would be the sector that India would always like to have 0%, right? Why? Because समझते जानते कि India is so dominant in the service sector. जेहेतु India is so dominant in the service sector, and that is why India is always aims to have dominate in the service sector by having this 99% reduction of the trade duty free access. So that would be win-win situation, because we are one of the what strongest exporter of the service sector, particularly when it comes to IT sector. That is there. So the agreement covering major service sectors aims to finalize the mutual recognitions of qualification within 36 months. Plus, apart from that, social security relief. The social security reliefs in the short terms, याको मध्य मु थरे आ पूर्व डिस्कस करथली। सोशल सिक्योरिटी रिलीफ्स अर्थात कोन देखंतु, सपोज एटा को मु ए पॉइंट को टिके बुझाउची। लेट्स से जने लोक ओडिसा रो लंडन को गला, लंडन से जॉब करिवो, जेतल से जॉब करूची जेमति कि इंडिया रे आमी कोन करछे लाइक पीएफ वगैरह कटुची, तो तांकर सेमति सोशल सिक्योरिटी मतलब जो स्कीम अछि सेथरे एम्प्लॉय निजे किछि कंट्रीब्यूट करे, एंड एम्प्लॉयर मध्य एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ विल कंट्रीब्यूट, राइट? सेटा को रिलैक्सेशन कर दबा, सो दैट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ विल बी हैप्पी, राइट? दैट इज लिबरलाइज्ड सर्विस एक्सेस। एटा मध्ये हम कहबा कि यूके कमिट करछि टू एलिमिनेट द बैरियर्स लाइक कोटा एंड टेस्ट, ensuring 137 सर्विस सब सेक्टर्स को अलाउ कराछु। अपार्ट फ्रॉम दैट, respect for the domestic sensitivities, India drop post study, that is the visa demand, while the UK
withdrawal its request for the legal market access. तो ये आम देखिपर गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट डेवलपमेंट जोटा है एंड वी आर हैप्पी राइट. So this is very important initiatives and the development has taken place. We hope and this is the zero tariffs आपण माने मध्ये देखि परिबे Indian Express रो गोटे कट मु एठी देछि कि power of zero tariffs. Now what are the product that would be जोटा कि आपण जीरो करा जो that means जदि आमे कहबा मु एठी टिके कहि रखे आपण मानकु राइट कि which are the product that would be zero tariffs करा छिबो. तो zero tariffs that means एठी कोन लिखे छि the power of zero tariffs. So that means 99% और लगभग जीरो तारिफ्स हमें कहि परबो 99%. तो 99% tariffs line downs to the zero duty हमें कहि परबा. तो what are the zero duty here you can see. That means marine products ऊपर आपन करे जीरो लागिबो. Arms and ammunition हेगला, base metals हेगला, chemicals, minerals, electronics, plastics, rubber, furniture, sports, gems, jewelry, glass, ware, ceramic, footwear, wood, paper, textiles, clothing, veggies, spices, oil. This will have what? Over I would say 0% duty on the following, down from 4 to 20%, now 99% reduction. So this is very important and this would be I would say the जेमति कि स्टार मोर आमे देखियो मोदी जी एंड स्टार मोर राइट दिस जण हम कहि पर इवन ए जो खालिस्तानी इशूटा मध्ये हमको बहुत टाइम देखिया को मिले. वी होप कि जेतले मने पको जेतले हमरो कि जयशंकर जी जेतले जाइथिले लंडन सेतले खालिस्तानी माने जो इवन अटैक करे पे से मन को बसला दैट वाज शॉक्ड द वर्ल्ड एंड इवन जयशंकर गॉट मतलब astonished by having such kind of how this happened right. तो एटा को हम देखि परिबो. सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड ओपीएससी जो बने आपन जानछत कि ओपीएससी प्रीलिम्स आगो को हवा को जाउछ एंड पर्टिकुलर आई वुड से व्हाट दैट मींस आपन कर जो अक्टोबर रे जदी टाइमलाइन अनुसार जदी हवा को जाउछ इट्स ए ग्रेट न्यूज दैट द स्टडी आई को आपन मन को पने एसी अनुशीलन OCS prelim test series 2024-2025 test series ने किया सी and this would be comprehensive test series which is it's a must go. I would say it's a must go for it and add some value add करंतु test करंतु आपन को जोठी weak रहुछि then improve that one. The sale is ending on the 31st of July 2025 so use the code what आप आपन को सेल पई you can use my code SHLIV to get the जहां भी आपन को discount here use it and get the discounts over there right आपको मध्ये आपन करि परिबे. नेक्स्ट टॉपिक आसबा नेक्स्ट टॉपिक कोन नेक्स्ट टॉपिक होची India has allowed the visa for the Chinese national for the tourist purposes. After 5 years gap, India resumed tourist visa for the Chinese border meeting held too. What is the point? The point is that since COVID-19 broke out in 2020, it was what 2020 that we stopped the visa being issued to the Chinese nationals. It was because of the what pandemic situation was there, and that is why in 2020 the government of India they stopped giving visa to for the Chinese national, and recently the government of India has undo it. They have done what undo, and now they're again giving what I would say is the approval for the Chinese national for the tourist purposes. They can visit now, right? And the same has been done by the Chinese national as well, that they are also giving accessibility for the Mansarva Jatra. Kana tamane jancho ki Mansarva Kailash mountain is one of the abode. It is believed to be the abode of Lord Shiva, and Indians do like it. Not only Indians, it's for the Buddhists, for the Jainis, for the Hindus. This is a I would say what the one of the most religious place, and Hindus mane madhya Nepalese mane madhya janti. तो चाइना भी सेमती कौन करछंती तांकर से जो हमें कहबा कि मानसरोवर यात्रा को भी अलाउ करछंती. आज वी हैव डन द टू साइड्स रिव्यू द सिचुएशन हमें कहबा ये सब केमती पॉसिबल हला. ए पॉसिबल हला बिकॉज़ द बॉर्डर टेंशन हमें कहबा जो कोविड-19 परे परे जेतर बॉर्डर टेंशन हला गलवान वैली क्राइसिस कथा नहीं जाओ ये सब हला परे वी होप के आज द इंडियाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ईज द वीजा नॉर्म्स दैट मींस कोठी ने कोठी हमको एठो जाना पडुची द सिचुएशन बिटवीन द टू नेशन हैज इंप्रूव्ड. The border tension has improved, somehow the cooperation has improved overall, and that is why leading to the gradual normalizations of the bilateral relations. The Ministry of External Affairs said, adding that the India and the China agreed to maintain the regular exchange and the contacts of the boundary affairs at the what diplomatic level and the military level. तो ये आपको एडा ही परियो समझते. This one is important one कारण मु कहली ना
तो ये इंपोर्टेंट जोटा मुझे कहली ये कारण ओबियसली देख मतलब यू कांट अफोर्ड मतलब आम बेसी आम अफोर्ड कर कि यार चाइना सहित केते दिन आम एमती झगड़ा करवा तो it is difficult to afford के country like China मतलब where we need to have maintain economic it's a what economic giant but this is I would say this is you have to and me too also to accept कि being an economic giant of the world China जहाँ सहित more than 130 or 120 billions of economic trade आमर को one of the largest partners trade partner so we can't avoid this person and also having the largest trade the what say land boundary share with India से हमें अवॉइड करें बेटर टू हाव द व्हाट आम कह गोटे सॉल्यूशन बाहर एंड ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करूँ पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ इन द मेन टाइम गोटे बहुत बढ़िया गुड न्यूज आसिक पहुंची आम पाखे कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे हेग जो नेदरलैंड हेग रही वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये कौन कर व्हाई आईसीजे रूलिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज इज सिग्निफिकेंट देख पॉइंट कौन पॉइंट हूँ आईसीजे मुझे कहली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ योर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आम कहीपर टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वेल तो ये कौन होता है ये कोर्ट एवं यूनाइटेड नेशन आम कह सरी आईसीजे वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ जो यूनाइटेड नेशन ये कहले जमीक तुम जनरल असेंबली अच्छी तो कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कंट्रीज आर अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन कोर्ट कहले कि ये जो क्लाइमेट चेंज ना या समस्ते ध्यान देवा कथा अर्थात जो मैंने साइन कर जो मैंने राटिफाई कर डिफरेंट एग्रीमेंट को जमी कियोटो प्रोटोकॉल कथा नहीं जाओ तो जिते तुमने कियोटो प्रोटोकॉल को साइन कर कॉप दैट मीन्स आम कॉप 21 को आप राटिफाई कर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट अच्छी ताकू जिते कौन कंट्री राटिफाई कर मान भी ना तुम एमती ना कि मानव ना तो से कोर्ट कहले कि कोर्ट हेल्ड दैट the countries are under legal obligation जो माने legal obligation अच्छी to take the step to reduce the greenhouse gases emissions the ruling is not binding किंतु ruling टा आपनकर बाइंडिंग नुह तो कोर्ट एठी कहउछंती कि कोर्ट कहया कथा कि भाई देखो जो माने आपनकर लीगल बाइंडिंग रछंती तो से माने काम तो करिवा दरकार ना भल केमथि हेबो यू नीड टू वर्क तो जेथरो तमे करछो दैट मीन्स बट दिस इज नॉट बाइंडिंग किंतु एटा कोन इट्स नॉट बाइंडिंग ना तो कोर्ट कहले कि कंट्रीज मान को जो मैंने कियोटो प्रोटोकॉल साइन करी जो मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करदी कौन गोटे प्रोटोकॉल बाइंडिंग अच्छी तो काम करो ना सपोज आम कह इंडिया इंडिया कौन कहले इंडिया कहले कि एनडीसी आई विल डू एनडीसी मतलब नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन मु मोर एनडीसी कर देछि कोटा 2040 टारगेट रखाई सम टारगेट इज 2070 सम टारगेट इज 2030 जो पंचामृत आम कहचे जमती वन व्हाट दैट इज आई वुड से वन जोटा कि 1 gigaton of carbon sequestration by carbon sequestration नहीं जाओ 50% of energy production from the non-fossil fuels हम कहवा and 500 gigawatt of energy production from renewable resources then 45% of carbon intensity and the GHG intensity to be reduced by 2008 level रो base level किंतु 2047 जाए सेमती नेट जीरो टार्गेट हमको 2070 जो रखी तो ये जो सब टार्गेट रखी सेमती बाकी देश मैंने भी करंतु ना राइट तो से भी बाकी देश भी करबा दरकार एंड दैट इज व्हाई तो हेग बेस कोर्ट इज द व्हाट मेन जुडिशियल बेंच जोड़ा यूनाइटेड नेशन रो मुतम आपन ऑलरेडी कह देछि ये कहबा देखा ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करंतु अदरवाइज दैट वुड कंप्लीट पेरिस खत्म हे जो पूरा वर्ल्ड ही हिजबो तो सेदर किए बंजो ना बडी विल बी देयर तणो दो माने एग्रीड होती जो मैंने प्रमिस कि वी विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस वे रिड्यूस करो ना देन व्हाई द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वांटेड दैट आईसीजे टू एड्रेस टू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहले कि भाई आपन दीटा कथा को मानतु ना कोन गोटे होची व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल लॉज टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम सेकंड व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जदी कंट्रीज माने करू नाहंती दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देखो आई नो के जो मैच्योर कैंडिडेट ना जो मैंने थर मीन्स दे वुड बी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ डिबेट this kind of what I would say this kind of outcome which is coming to the in the news otherwise it would be looking like a superficial तुमको लगे यार कौन पढ़ाउछंती ये this is not important this is none of our business but this is your business this is not my business this is required for the writing of a good answer
it will act as a photo point. ये photo point अनुसार काम करिवो. This is not like that I am talking about for the views. This is for you. This is for you, and this is for your marks. This will enhance your marks. What it says that UNGA has two questions: whether the country is liable to pay something else. If what are the obligations? The obligations is, I will show the obligation. जदि आप न करूछंती कोन हबो जदि न कला गोटे कंट्री न मानिला यूएसए कहबे सर मु मानिबिनी I would not obey that climate change which I signed in 2015, that is the COP 21 जोटा मु साइन करथि मु तको मानिबी नाही ताले कोर्ट एग्जामिन कोन कले देखो कोर्ट एग्जामिन द प्रोविजन 3 क्लाइमेट ट्रीटीज कोर्ट कहले 1994 रे यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन हेतला दैट इज UNCCC 1997 2015 कोर्ट कहले तीनटा जिंस आपन देखंतु 1994 1997 2015 एठी कोन हितला आपन कॉप 21 एठी कोन हितला आपन क्योटो प्रोटोकॉल एठी कोन हितला आपन यूनाइटेड नेशन जेतला में ऑथ समिट पर हमें कोन कहले UNCCC को कहले ये जो तीनटा जिंस एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल इंटरनेशनल लॉज कोर्ट कहले देखो ऑब्लिगेशन अर्थात आपन जति आरो मेंबर अछंती इफ ए कंट्री इज मेंबर ऑफ और अबाइड बाय दिस अबाइड बाय दिस अबाइड बाय दिस अबाइड बाय दिस ताहले तो ताले जेतेबेले सेतेबेले तुम राटिफाई करछो ए सब करछो माने कोन पई जी को रिडक्शन पई ना ताले बे कहीं मानुनो वेदर इट वुड बी पेनल्टीज तो यूएनजीए पचाले के सर ये आईसीजे को कोन एटा आपई किछि पेनल्टीज हेई परबो कोन हेई परबो तब देखिबा हम प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी लॉज हेगला अनक्लॉज 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हम प्रोटेक्टिंग ओजोन 1992 कन्वेंशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी 1994 that is de-desertification कहले एते सारा these are the legal framework if a nation violate this legal framework he sorry I would say C country मतलब सबले C कहबा ताले C needs to pay से ता पई खेती पूर्ण करिवो एबे से पूर्ण करिवो कि नै दैट्स अ डिफरेंट थिंग तो दिस इज 1994 कन्वेंशन फॉर द कम्बैट ऑफ de-desertification in 1992 आपन को CBD कथा नै जानतु and Montreal protocol आपन कथा नहीं जानतु so these are the what high C unclosed कथा नहीं जानतु and these are what unclosed Montreal protocols ये सबु जदी कोनसी देश मानु नाही तल त ताको पेनल्टी लागिवो किंतु कोर्ट जहा कहबो कोन मानिवो कि केही सेटा तो नॉन बाइंडिंग जेहेतु ए जो हमें क्लाइमेट एक्शन कहूचे ये जो कंट्रीज मान कर ताले एटा गुटे दिस इज नॉट चॉइस कोर्ट कहबा कथा द कोर्ट सेज The court concluded that the climate action was not a matter of choice or preference but a legal binding. This is not a matter of choice. This is not a matter of preference. The countries were obligated to take the measures जो माने सेथरे साइन करिसंती एसु ट्रीटी से माने निजर मेजर्स नियंतु एंड रिडक्शन करंतु ग्रीन हाउस गैसेस को. In addition जो माने रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री माने रहिसंती एनेक्स 1 रे से आपनकर UNCCC रो से माने ऑब्लिगेशन के सामने टेक्नोलॉजी एमिशन रिडक्शन करिवे फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काकू डेवलपिंग कंट्रीज को करिवे ये तो हमें पढ़ी छे भी हमें UNCCC रे पढ़ी छे तो आकू कोरोना तमे तुमको सर जदी न हैला ये जो UNGA दीटा क्वेश्चन पचला देन कोन हबो राइट ताली UNGA कोन कहले ताली UNGA कोन कहले The court has held that the countries are under the legal obligation to take the steps to reduce the greenhouse gases. किंतु रूलिंग था बाइंडिंग नो हो जहाँ भी हो ये जो डेवलपमेंट ना इट्स ए एनकरेजिंग डेवलपमेंट मु तो कहबी इट्स ए हैप्पी डेवलपमेंट एटलीस्ट जो माने एनवायरनमेंट पई काम करूछंदी ना से माने खुशी हेबे कि समाव इंटरनेशनल कोर्ट भी तो सपोर्ट करूची हमको otherwise where do we stand right we will end it off somewhere else na supreme court कथा में आसीबा तो सुप्रीम कोर्ट कोन कहले ये जो मैटर आपनकर सुप्रीम कोर्ट आसी छै ना ये ओडिशा मैटर को लेके आसी छै ना कोन मु आपन मन को कहि के रखी कि ये सातकोशिया जो टाइगर आपनकर सेंचुरी रही छी सातकोशिया तो नेशनल पार्क्स नो तो सातकोशिया सेंचुरी रो इको टूरिज्म आजकल तो जानते हो कि इको टूरिज्म ओडिशा गवर्नमेंट प्रमोट करूची आ जेमती शीत दिन आसो इको टूरिज्म प्रमोट करिवो
ओडिशा गवर्नमेंट इको टूरिज्म को प्रमोट करिवो बोली सातकोशिया रो इको सेंसिटिव जोन रे किछि ब्रिज करिबा घर करिबा इंफ्रास्ट्रक्चर करिबा आप पई अनाउंस करे जहाकु कोई कलेक्टर माने मध्य साइन करंती और अप्रूवल दियंती जेते बेले अप्रूवल मिली गला सेते बेले ये केस सुप्रीम कोर्ट रे जने लॉयर को केस करंती अंगन होची बंसल से कहले कि को हिसाब रे ओडिशा गवर्नमेंट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ आई वुड से व्हाट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नागढ़ एमाने केमिति अलाउ कले कि एठी प्रोजेक्ट हो इको सेंसिटिव जोन रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसार इको सेंसिटिव जोन हबा कथा जोटा कि आपनकर एनटीए जो नेशनल टाइगर अथॉरिटी से कहथिले 1 किलोमीटर बफर जोन रहिबो जोठी आपन डिस्टर्ब करि परिबे नाही ये सब को किए फू कला ताल सेति में सुप्रीम कोर्ट एग्रीज कले सुप्रीम कोर्ट कले ठीक अछि ए सातकोशिया टाइगर रिजर्व केस ता में सुनिबा राइट ताली ये केस के सातकोशिया टाइगर रिजर्व जोटा मु कहली नोटिफाई जोटा 2007 रही छे क्रिटिकल इकोलॉजिकल एंड लीगल प्रोटेक्टेड एरिया ओडिसा रे जोटा कि 1136.70 स्क्वायर किलोमीटर अछि सुप्रीम कोर्ट कहले कि ठीक अछि केस हमें सुनिबा काहे कि जोटा मु आपन कहली कि बौद्ध नयागढ़ अनुगुल कटक ये सब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देथिले कहले चलो एठी ब्रिज पय अलाउ अछि एठी आमे कहिबा कॉटेजेस करि परिबो एक मतलब टूरिज्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करि परिबो सेति में एडवोकेट गौरव कुमार बंसल केस करे सुप्रीम कोर्ट रे फाइल करंती से 3 जज बेंच को जाए टॉप कोर्ट जोटा कि सीजीआई बी आर गवाई एंड हु एग्री टू लिस्ट द हियरिंग द मैटर एमन कहले ठीक अछि तो सीजीआई निजे मध्ये कहले कि ठीक अछि याको सुनानी करबा जदि एटा ग्रॉस वायलेशन होछि ताली मैटर टाको सुनिया पड़िबो नहले गोटे दिस इज वुड बी ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ तेन सुप्रीम कोर्ट मध्ये राजी हेले कहले ठीक अछि जो हमरो ये माने को हिसाब रे एमन को माने अलाउ करले कि सेठी कॉटेजेस हबो सेठी ब्रिज हबो सेठी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हबो ताको अलाउ कला कि काहे कि कमेंट करे तो तार क्वेश्चंस जेतरा पछले सेति पे हमरो बंसल सेट के सातकोशिया रिजर्व जोटा कि नोटिफाइड 2007 रे हितला ये एरिया तार रहिछि जोटा कि हमें गोटे जॉर्ज सेंचुरी एंड सेथिरे दीटा सेंचुरी रहिछि आपनकर दैट इज बिसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड महानदी रिवर रो दीपट साइड दीटा अछि गोटे साइड रे सातकोशिया जॉर्ज सेंचुरी और गोटे साइड रे बिसीपाली मझिरे आपनको महानदी जाउछि ये गोटे इकोलॉजिकल ई रिप्लेसेबल एरिया एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक एलिफेंट रहउछि घरियाल रहउछि मगर रहउछि तणु फ्लोरा फौना अछि तणु आपको अपन डिस्टर्ब करंतु नाही की कहबा कथा बंसल कहबा कथा त को हिसाब रे आपन ताको कहले कि याकू डिफॉरेस्टेशन हबो ये हबो से हबो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हबो दिस इज कंप्लीटली इलीगल ये तो आपण करि परिबेनी एटा तो इको सेंसिटिव जोन आ सुप्रीम कोर्ट आगुर मध्ये कहचंती इको सेंसिटिव जोन को आपण डिस्टर्ब करि परिबेनी कोन डिस्टर्ब केमते कले हाउ इट्स नॉट पॉसिबल प्लस रिकॉग्नाइज एज अ रामसर साइट ए मध्ये गोटे इंटरनेशनल साइट रामसर साइट मध्ये हम जानि छे जोटा कि 2016 रे फिशिंग बैन करा गला इंपोस्ट ऑफ द घरियाल्स हमें करा गला फिशिंग इको सेंसिटिव जोन केते किलोमीटर हबो बोली सेते बेले कहा गला कि 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन रहिबो ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किंतु अच्छा जाबू ता पूर्व आपन का आरंभ बैच 6 रही छी हियर ए जो आरंभ बैच रे हिंदी एजुकेटर्स माने बेसी रहबे ओडिया एजुकेटर रहबनी यारो सेल मध्ये 31 ऑफ जुलाई रे आपन को रहउची प्री प्लस मेंस पास इंटरव्यू रहउची आको मध्ये आपन माने एनरोल कर परिबे तेणु करके ये हाँ मुझे कहती से कहली कि जुरिडिक्शन तो बंसल फर्दर कहले कि देखो ये जो पास कर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स माने विदाउट जुरिडिक्शंस एंड वायलेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किए करिया पई हु आर यू राइट दिस इज नॉट कमिंग अंडर योर जुरिडिक्शन तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आर राइट दिस इज नॉट देयर पावर डज नॉट कम्स विद देम दिस lies on NTA is lies on wildlife that means I would say government Ministry of Environment Protection Environment and Climate Change से तरह करियो तमे करिया पिंकी भाई तम मन इच्छा जीरो जोन कर दो आ ये माने कोन करछन सुनो डिटेल रे कहूची ओडिशा गवर्नमेंट सातकोशिया जर जो इको सेंसिटिव जोन टाको जीरो कर दैछंती जीरो करी सेठी इंफ्रास्ट्रक्चर करे बोली प्लान कर दैछंती जोटा कि गवर्नमेंट कहितले सेते बेले सेंट्रल गवर्नमेंट कहितले बा जेतले इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हुए सेते बेले कहैतला 1 किलोमीटर आपण इको सेंसिटिव जोन रखिबे केतबेले 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन रहिबो किंतु ओडिशा गवर्नमेंट ताकू फू कर दैछंती
ताकू वर्तमान माझी गवर्नमेंट ताकू फू करके कह 1 किलोमीटर कर कले कौन हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलप हो भाई पैसा पे एते पागल कहीं केते कौन इको टूरिज्म बूस्ट करने क्या तो मना नहीं दैट डज नॉट मीन्स इको टूरिज्म जहाँ कर इको रही खाली टूरिज्म इको रही कि इफ देयर वुड बी प्रेशर इफ देयर वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लास्टिक पोल्यूशन ह्यूमन डोमिनेंस now one of the most interesting topic ये कौन अपन देखुं कि सीएम ऑफ ओडिशा एंड सम ऑफ द ऑफिशियल्स एंड तांकर जो मेंबर्स माने बस की कलीग्स माने किसी डिस्कस करूछंती व्हाट दे आर डूइंग दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द महानदी डिस्प्यूट विल बी सॉल्व दे आर टेकिंग स्टॉक ऑफ महानदी डिस्प्यूट्स केमिति सॉल्व हबो तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू गोटे क्वेश्चन कले नवीन बाबू कहले कि माझी बाबू जदि आपण भावुचंती महानदी डिस्प्यूटा सॉल्यूशन आपण खोजुबा बा जदि if you are ready to solve the Mahanadi disputes then have the all party discussion आपण करंतु all party discussion रे then we will take the decision otherwise हमें decision नबा all party discussion हमें नबा तो all party discussion रे हमें कौन करिबा तेणु माझी बाबू को कहले कि माझी बाबू देखंतु आपण निजे डिसीजन नियंतु नहीं बेटर के ऑल पार्टी डिबेट हो सेथरे में हो माझी बाबू कहउचंती देखंतु सेठी छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार ओडिसा रे बीजेपी सरकार सेंटर रे बीजेपी सरकार तो कौन हो जीवो इजीली एमिकेबल सॉल्यूशन टा हेई परिबो आम भितर सॉल्यूशन करबे सेंट्रल गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिव माझी बाबू कहबा कथा तेणु भुवनेश्वर में देखिबा कि डे आफ्टर द चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी रिएटरेट दैट द महानदी रिवर डिस्प्यूट्स will be resolved through the talk Chhattisgarh and leader of opposition Navin Babu Tuesday demand all party discussion on the issue नवीन बाबू कहले ना ना आपण ठीक अछि जहा करछन्ते बट एटलीस्ट गोटे ऑल पार्टी डिबेट हो सेटा आपण कोन चाहउछन्ती बा केमती कोन करछन्ती ताको हम डिटेल ले देखिबा ना मु कहि दिए महानदी डिस्प्यूट्स रो हिस्ट्री कोन ये तो ओपीएससी बहुत थोड़ा पचाछि एंड इवन UPSC also do entertain such kind of topics, right? So what was the issue? Issue कि मु कहिबी आपन को what issue? Now issue comes in 2012 and 2014. It was the election time रे हमें देखिबा सेतरो जेतरो 2013-14 इलेक्शन जेतरो हैला से टाइम रे इलेक्शन कथा रे महानदी टॉपिक उठे एंड 2018 रे 2018 रे महानदी डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बसे ट्राइब्यूनल supposed to give verdict 2026 रे बट 2026 रे verdict दबो बोली कहा जाउची किंतु आज पर्यंत किछि हेई नाही नवीन बाबू को समय बीती गला किंतु से किछि सॉल्यूशन आसिला नाही एक्चुअली 2010 रे जेतरो आपनकर छत्तीसगढ़ एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट है कि गोटे नुवा स्टेट हैला छत्तीसगढ़ बहुत सारा बैरेज और डैम्स तैयारी करे को लागले ता द्वारा कोन हैला तांकू जेहेतु वाटर दरकार सेति पे हमर वाटर शॉर्टेज हे गेला and now the dispute has emerged. now एथरे हम कोन देखिबा एथरे हम देखिबा कोन कि जदी स्टेटस को हम देखिबा ये जो डिस्प्यूट्स होई छै आपन को जो महानदी डिस्प्यूट स्टेटस ना ये 2018 हितला जो अंडर सेक्शंस 4 जोटा कि इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट्स जोटा कि आपन को ये रही छी राइट तो जोटा आपन को इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 रही छी तार अंडर सेक्शन 4 अंडर आम ये डिस्प्यूट अंडर कौन है इंटरेस्टेड वाटर महानदी जोटा रखाई मतलब ट्राइब्यूनल ही थाए आम कहवा ताले 1956 जोटा इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट एक्ट अच्छी तार सेक्शन 4 अंडर ट्राइब्यूनल ही थाए हैला एट प्रेजेंट द डिस्प्यूट जोटा कि आपनकर सेक्शन 5(2) अनुसार एटा रही यार देखो किसी वर्डिक आसी ना आमे मध्य अपेक्षा करूँ कि जिते जल्दी आसीज से भल आउ गोटे विन विन सिचुएशन हो राइट गोटे विन विन सिचुएशन हो तेणु से आम कह एंड होप के जो 2026 रे कह जाऊँगी कि 26 रे डिस्प्यूट हो खत्म हो खत्म हम कौन ट्राइब्यूनल तार वर्डिक देव ये खत्म हबार कौन अच्छे ओडिशा गवर्नमेंट जब राजी नब से पुणी फाइल कर ये कर पुणी आउ थे हम तो विश्वास चलो जहाँ भी हो पुणी से गोटे नेचुरल जस्टिस हवा दरकार एमती ना कि छत्तीसगढ़ सपोर्ट रे दे आम भोकुआई बसबू हाँ सेमती किसी तो हबार ना इट शुड बी नेचुरल जस्टिस
इट शुड बी व्हाट नेचुरल जस्टिस हवा दरकार तेणु जस्टिस नेचुरल हो एंड होप के आप जो आप में डिस्कस करूचे सेक्शन 4 सेक्शन 5 ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जोटा कि अमेंडेड हैला परे एटा में कहि परो एट प्रेजेंट डिस्प्यूट under the adjudications of the tribunal section 5 subclause 2 interstate water dispute act 1996 अंडर रही एंड होप रिजल्ट आसी ये आप देखी पारे ये जोटा मुझे सातकोशिया कथा कहूली ना अच्छा ये स्लाइडटा टे पढ़े ये सातकोशिया देखो ये तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी सातकोशिया होची जोटा इको सेंसिटिव जोन मु कही आपको जोटा आमर अमेंडमेंट हवा था जोटा कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी गोटे मॉनिटर करुँच एंड वर्तमान भुवनेश्वर रे आमे कहबा ओडिशा गवर्नमेंट कौन कहले गुरुवार दिन ओडिशा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को कहिसंती कि आमे जो कटेज करिबा बा ब्रिज करिबा सातकोशिया रे प्रपोजल देइथिलु ताको आमे विड्रॉल करूचे ताको आमे कौन कहूचे लैप्स कर दउचे बा ताको आमे खत्म करूचे ड्रॉप करूचे एमती आमे किछि करिया को जाउनी तेणु अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट केस चली था ओडिशा गवर्नमेंट विरुद्ध सो इन इट्स कंप्लेंट्स रिपोर्ट फाइल्ड in the Central Empowerment Committee, the wildlife wings assure that the draft eco-sensitive zone plans for the Satkosia Tiger Reserve will be submitted in the line of guidance of the Minister of Environment, Climate Change and the Forest. And the most important topic, one of the most important topic, कौन है ये? One of the most important topic, I means the topic related to the I say इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन मध्य ए वर्ष मध्य ओडिशा जदि आमे गवर्नमेंट देखिबा बा ओपीएससी रे क्वेश्चन मध्य पचारि थिले ओपीएससी दिस ईयर आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेंस रे आसीतला ए टॉपिक मेंस रे आसीतला तो ओडिशा कोन करछि 1790 करोड़ दउछि ताकि इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हबो कोन पई टू टैकल द फ्लड ड्रॉट spread that spearhead by the water resources department से मैंने कहते तेणु जमती कि ड्रिंकिंग वाटर सर्टेज होची फ्लड कंट्रोल हो पार ए सब आसूची तो ओडिशा गवर्नमेंट भावुंट कि हाँ ठीक अच्छे इंटरलिंकिंग जोटा मुझे आपण को कहली कि ए वर्ष ओपीएससी मेन्स रे टॉपिक आसला कि इंटरस्टेट लिंकिंग को नहीं इनिशिएटिव्स रे आमे देखिबा कौन कौन इनिशिएटिव रही आप देखिपारे जमीती कि आमे कहि परिबा एथरा में इरिगेशन बढ़ी जीवो फ्लड कंट्रोल हबो ड्रिंकिंग वाटर हे परिबो ये सब आमे कह वेरियस दैट रीजन ऑफ द स्टेट सोर्सेस रु जणा पड़ी कि हमर जो सरप्लस वाटर रही दैट इज व्हाट प्लान टू कनेक्ट द सरप्लस रिवर बेसिन विथ द डेफिसिट बेसिन सहित थ्रू द नेटवर्क ऑफ 6 प्रोजेक्ट्स जेमती कि आपनकर काट्रा लिंक जोटा कि दैट इज हीराधारीवती फ्लड फ्लोर कैनाल आमे कहबा बाहुदा ऋषिकुल्या बेसिन लिंक आम कहीपर वंशधारा ऋषिकुल्या लिंक हो पार ताले बाहुदा ऋषिकुल्या एंड ऋषिकुल्या वंशधारा ओंग एंड सुक्तेल जोटा कि आम कह गालांट कैनाल करा जाउछि देल तेलेंगिरी एंड अपर कोलाप को करा जाउछि तो एगुड़ा टिके मन रखा बहुत इंपोर्टेंट आपको पूरा आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आंसर लिखि पारिबे देन बाहुदा ऋषिकुल्या जोटा लिंक हवा एंश्योर द ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी आम कर बहरमपुर टाउन गोपालपुर को एंड आम कहबा वंशधार ऋषिकुल्या जोटा इंटरलिंक होची सेटा थ्रू द नंदिनी नूला जोटा कि बहुत वाटर प्रॉब्लम सेठी हुए एंड ओंग सुक्तेल जोटा आपनकर होची रिजुमिनेट करिवो 108 टैंक्स एंड क्रिएट 10,000 हेक्टर्स ऑफ इरिगेशन हे परिवो सेटा जोटा कि हम कहबा ओंग सुक्तेल सेमती सिमिलरली आम कहबा तेलेंगिरी अपर एंड कोलापटा जदि हो पारुछि सेथिरे मध्ये बहुत लोक बेनिफिट पाई परिबे तो वंशधारा ऋषिकुल्या बहरमपुर ये सब रीजन रे जदि आम करि पारुछे ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहिबो कना ये को कॉपी पेस्ट कर दियंतु पूरा कॉपी पेस्ट करके रखिदेवे सो दैट आपन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करिवो जोटा मु कहली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करिवो हमरो मेंस आंसर राइटिंग रे देन आम नेक्स्ट आसवा आम देखा कौन इंडियन मालदीव रिलेशन इंडिया मालदीव रिलेशन जदि आम देखा जो मुइजू रही आपंकर आप देखिपारे दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ मुइजू द मालदीव प्रेसिडेंट आम कह द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव ये लोक जिते इलेक्शन प्रचार करती से इंडिया विरुद्ध रे बहुत कहती कि गो आउट इंडिया गो अवे एमती सब कहती एंड से डिस्कस कले कि इंडिया मालदीव रिलेशन एते खराब हो गला कि प्राइम मिनिस्टर निजे
जाकि लाक्षाद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कले इलेक्शन हैला परे जेतले मालदीव बहुत सीरियस कंडीशन रे थिले ताको पैसा दरकार थला ताको फूड थला ए सब थला इंडिया ही हेल्प कला एंड नाउ एबे पॉलिसी पूरा मालदीव रो चेंज होगला के वेलकम इंडिया आउट चाइना हे गला सेतरो कहतला इंडिया आउट चाइना को इनकम करो इन कराओ ना 4850 crores रो लाइन ऑफ क्रेडिट देले मोदी जी कहा को कि मालदीव रो पार्लियामेंट देखो मालदीव रो पार्लियामेंट मालदीव रो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मालदीव रो मेडिकल फैसिलिटी मालदीव रो क्रिकेट स्टेडियम ये सब किए डेवलप करी इंडिया करी पेट्रोलिंग बोट मालदीव रो सेफ्टी सिक्योरिटी सब इंडिया बुझे राइट एंड आमर जो नेबरहुड फास्ट पॉलिसी रही वी फोकस ऑन दैट we also focus on that we never say that Maldives is not a friend एमती आम कहना राइट तो मुई जो आपन जो रही आम से कहे एंड एटा मु कहली कि महासागर विजन जो रही आमर इंडिया विल ऑलवेज कोऑपरेट तार डिफेंस हो तार ड्रिंकिंग वाटर हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते that we will deepening the security ties reflect the trust between the two nations security ties बढ़ी our defense and the security cooperation is a what testament to the mutual trust the roof of our relationship are older than the history pardon me the roots the history and as deep as the sea our friendships will remain bright and clear ये कहते तो मोदी जी सेंटेंस आम कहीपर मालदीव इज ऑलवेज स्ट्रेंथनिंग आम कहबा कि सिक्योरिटी डिफेंस ये सब स्ट्रेंथनिंग हो एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आम देखा ओडिशा टेक्स 2025 ये कौन एथिरे आम कहबा कि ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव नौचंती केमते टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को बूस्ट करी ओडिशा रे डिफरेंट जेते कोऑपरेटिव्स बिग कोऑपरेटिव कंपनी अछि बा आम कॉटन टेक्सटाइल जो ने प्रमोट करछि जो बिजनेसमैन तांको अट्रैक्ट करछंती कि आसतु ओडिशा रे आपण टेक्सटाइल बिजनेस करंतु टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टाब्लिश करंतु ये आपण देखि पारे मोहन जी तांकर मीटिंग करूछंती चीफ मिनिस्टर मोहन माझी सेड द ओडिशा offers the most attractive incentive packages for the country under the industrial policy resolution 2022 and the Odisha apparel that is our technical textile policy 2022 रे जो थे Odisha Tex 2025 the biggest textile investment summit in the eastern India on the July 25 record the summit is aimed to promote the Odisha as a major hub for the textile and apparel technical textile industry एटा मध्ये करछ तो एटा गोटे बहुत बड़ इनिशिएटिव हम कहि परबा मोर देन 7000 crores रो इन्वेस्टमेंट हमकु बसिबो केते 7000 crore रो इन्वेस्टमेंट आ जोठी 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 7000 रो अधिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज माने करबे डिफरेंट कंपनीज माने कहचंती कि इन्वेस्टमेंट करबे बोली मेजर पुश रहबो टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को पार्क करा जिवो जेमति कि आपन को देखंते 300 डेलीगेट्स अक्रॉस द कंट्री जेमति बेंगलुरु सूरत नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर पंजाब वेस्ट बंगाल एठू सब आसिक से माने देखी कि केमती वेयर हाउस हो पारिबो केमती अपैरल हो पारिबो कोठी इंफ्रास्ट्रक्चर हो पारिबो गवर्नमेंट कोन कोन फैसिलिटीज देउचंती तेनो जो ओडिशा टैक्स जोटा हम कहबा टैक्स 2025 आको टिके मन रखिबे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट राइट जेथरे हम कहबा के टेक्सटाइल समिट जोटा हमर 2025 ऑर्गेनाइज कले ए बहुत इंपोर्टेंट तो एथरे हमर बहुत सारा कंपनीज माने देखि पारो किछि इंडस्ट्रियल कंपनीज एमती एमसीआईएल प्राइवेट लिमिटेड फास्टेव बेबी वेयर हेगला क्रिएटिव गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदिति लाइफस्टाइल हेगला आपन को हिंडाल को हेगला एससीएम गारमेंट्स कथा नै जंत प्राइवेट लिमिटेड देन तिसूर बेस्ड आदिस्तम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर बेस्ड केपीआर मिल कथा नियंतु एमती बहुत सारा कंपनी আছে 7200 सॉरी 2 कोटी टंका गोटे साइन हेछि इन्वेस्टमेंट माने करियो बोली आगु को जाई कि मेक इन ओडिशा कॉन्फ्लेक्स 2025 न मते हेइथिला तो होप के आगु को जाई कि बहुत सारा हमको एम्प्लॉयमेंट मिलिबा अपैरल सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर रे तो जो पिला माने सूरत को जाउछंती बा बॉम्बे जाउछि दिल्ली जाउछि जो माने टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करिया पे I hope these peoples will be retained within the state and amaro export बढ़िबो जो टारगेट रहिछि हमरो कि ओडिशा will be a developed country by 2036 सेटा मध्ये हमें अचीव करि परिबा राइट परिपूर्ण बैच चलीछि 6 एनरोल करंतु यूज माय कोड SSLIV to get the maximum discount 9999 रहिजो so this is the weekly lesson for the today's session एठी मु आज सेशन को एंड करूछि थैंक यू एवरीवन हां डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड to comment it thank you everyone have a good day tomorrow